Ours is an extremely hard-earned independence. Our freedom struggle is an epitome of unfathomable endurance, grit and determination, and the urge to excel, where there's nothing to fear but complete freedom to aspire and achieve. Our founding fathers gave to us the Constitution of India. Hello and a very warm welcome, viewers. You're watching In Depth with your host, Kriti Mishra. Parliament of India witnessed a special discussion on 75th anniversary of adoption of Constitution of India. A distinctive document with many extraordinary features, the Constitution of India is the longest written constitution of any sovereign nation in the world. The original text of the Constitution contained 395 articles in 22 parts and 8 schedules. It came into effect on January 26, 1950, the day that India celebrates each year as the Republic Day. The Constituent Assembly of India sat for the first time on December 9, 1946, focusing on deliberations on specific features or segments which led to the adoption of the Constitution and a democratic republic. The rule of law is the bedrock of democracy and is the basic feature of the Constitution, which cannot be altered or amended. It is the role of all the organs of the state to ensure that democracy is inclusive and that there is accountability, since India opted for a parliamentary form of democracy where every section is involved in policy making and decision making. The concept of accountability in any republican democracy while exercising public power has to be taken into consideration. The aim of all the constitutional deliberations in India was to ensure equitable and participative development, which was the need of the hour in the Indian social, economic and political milieu. The opening and the last sentences of the preamble, "We, the people, adopt, enact and give to ourselves this Constitution," signifies the power is ultimately vested in the hands of the people. Parliament of India is the supreme legislative body which reflects the will of the people. As in other parliamentary democracies, the Parliament of India has the cardinal functions of legislation, overseeing of administration, passing of budget, ventilation of public grievances, and discussing various subjects like development plans, national policies, and international relations. I propose to make this appeal. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. That this Constituent Assembly, although it is a British creation for the time being, but once it comes into existence, it has the power, if it has the will, to assert its right and to do what is best and proper for the good of the people of India, irrespective of caste, creed or community. The discussion on glorious journey of the Constitution of India in Parliament was not only enlightening for lawmakers shaping the nation's future, but also for the youth, fostering their understanding of constitutional values. Honorable members, today we commence a two-day commemoration of a defining moment in our nation's history, the 75th anniversary of our Constitution's adoption on November 26, 1949. This milestone invites us
not to just celebrate, but to deeply reflect on our journey and chart our path forward. This Constitution has been the bedrock of the world's largest democracy, testament to the profound wisdom of its architects and the resilience of our democratic spirit. Let our deliberations in this House over the next 2 days reflect the gravity of this occasion. May our discussions strengthen the bond between our parliamentary institutions that seek to serve 1.4 billion people, fructifying their expectations and aspirations. As we look ahead to 2047, when India marks centenary of its independence, let our debates illuminate the path forward towards our vision of Viksit Bharat. भारत के संविधान सभा द्वारा आज अंगीकार किए के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सदन एक व्यापक चर्चा संवाद के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है। ये हमारी गौरवशाली यात्रा बहुत महत्वपूर्ण आम पड़ाव पे है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि इस चर्चा में हम सकारात्मक और एक प्रेरणादायक चर्चा हो, ऐसा मेरा आग्रह है। The Defence Minister of India, Rajnath Singh, initiated a 2-day debate on the Constitution in the Lok Sabha with a sharp focus on its historical significance and its role in shaping the nation's governance and global standing. He spoke on politicizing the Constitution's legacy and criticized the Congress Party's efforts to attribute the creation of India's Constitution solely to one particular political party. संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सदन और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। कुछ लोगों द्वारा हमारे संविधान को कॉलोनियल रूल यानी उपनिवेशवाद का उपहार मान लिया जाता है, या अक्सर हमारे संविधान को पश्चिमी देशों के संविधान से ली गई अच्छी बातों का एक संकलन मात्र मान लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला हुआ यह अमृत है। हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित यह हमारा स्वाभिमान है। यह एक सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स का आउटकम है। स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इस बात पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई संस्थाओं और विभूतियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनमें से बहुत से लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Prime Minister Narendra Modi also addressed the Lok Sabha on special discussion on 75th anniversary of adoption of Constitution, terming the achievement of 75 years as an extraordinary feat. The Prime Minister expressed pride that the Constitution had overcome all the predicted possibilities for India soon after its independence and the subsequent challenges to bring us all to this far. He expressed deep gratitude towards the Constitution makers and the crores of citizens for this great achievement. He remarked that the citizens of India had passed every test in successfully adopting and living the values of the Constitution as envisioned by its makers. He also said that it was, therefore, the citizens who truly deserved all the accolades. हमारा देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में
बहुत मजबूत कदम रख रहा है। और इतना ही नहीं, ये 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, हम इस देश को विकसित भारत बना करके रहेंगे। ये हर भारतीय का संकल्प है, ये हर भारतीय का सपना है। विविधता में एकता, ये भारत की विशेषता रही है। हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं और इस देश की प्रगति भी विविधता को सेलिब्रेट करने में है। लेकिन गुलामी की मानसिकता में पले बड़े लोगों ने, भारत का भला न देख पाने वाले लोगों ने, और जिनके लिए हिंदुस्तान 1947 में ही पैदा हुआ ये जो धारणा बनी थी, उनके लिए वो विविधता में विरोधाभास ढूंढते रहे। इतना ही नहीं, विविधता के इस अमूल्य खजाना है हमारा, उसको सेलिब्रेट करने के बजाय उस विविधता में ऐसे जहरीले बीज बोने के प्रयास करते रहे ताकि देश की एकता को चोट पहुंचे। आदरणीय सभापति जी, हमें विविधता का उत्सव हमारे जीवन का अंग बनाना होगा और वही बाबा साहब आंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पिछले 10 साल The Lok Sabha also witnessed rich discussion on the glorious journey of Constitution. Originally, sir, 389 members चुने गए थे संविधान सभा के लिए, और बाद में जाकर के पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग के बाकी मेंबर्स सब विड्रॉ हो गए, तो रह गए थे 299 मेंबर्स। और 299 मेंबर्स ने टोटल उसमें 15 महिलाएं और 8 मेजर कमिटियां और 13 माइनर कमिटियां गठन करके 2 साल 11 महीने 18 दिन, कुल मिलाकर के 11 सेशंस और 165 दिन काम करके ये महान संविधान का रचना हुई है। हमारा तिरंगा झंडा में 3 कलर है, सबको मालूम है। बीच में सफ़ेद कलर के बीच में जो धर्म चक्र है, हमारा जो धर्म चक्र का नीला रंग होने का कारण, वो भी हमको सबको मालूम है, मैं फिर भी जिक्र कर रहा हूँ, उसको व्हील ऑफ लॉ, विधि का चक्र कहा जाता है, क्योंकि नीला रंग दर्शाता है आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। मैं फक्र महसूस करता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का जब कार्यकाल शुरू हुआ, उसने संविधान को उसी स्पिरिट को मानते हुए अपना सरकार का मंत्र को इस देश का सामने में रखा, और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। संविधान ने अगर साहस नहीं दिया होता तो हम लोग इमरजेंसी में इतना झेलते कैसे? आपकी प्रताड़ना को हम लोगों ने झेला, तो यह संविधान ने ही ना हमको साहस दिया था, और उस संविधान में हम लोगों ने झेला, तो ये संविधान ने दिया है। लेकिन आपने कभी झेला नहीं है। आप समझती हैं कि सोना का चम्मच लेके हम लोग पैदा हुए हैं इस देश में शासन करने के लिए। देश की जनता ने कहा कि आप विपक्ष में बैठने के लायक हो, वहीं बैठते रहो, वहीं आनंद करते रहो। मोदी जी तीसरी बार आए हैं, चौथी बार आएंगे, आपका नामो निशान कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। Delimitation of constituencies that is supposed to happen in the next 2 years. So the census has to happen, and then the delimitation has to happen. I'll just give you the data, sir. Out of the 4 states, UP, Bihar, Rajasthan, and MP,
they have 169 seats, sir. They will go, as per the calculation right now with the population census, it will go to 324, sir. That is the increase of 155 seats, sir. Whereas Andhra, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, 5 of us put together, it will go from only from 129 to 164. That is only a rise of 35 seats, sir. Whereas they get 155 seats, sir. Southern Indian states will get 35 seats. So this will not be helpful in the federalism, sir. So I request, like how we do it for the finances, where the states are doing bad financially, it is given benefit, sir. Same way where the population is decreasing, it should also be given benefit. हम कहां से शुरू किए थे और कहां चले गए? अपनी विरासत भारत की विरासत होगी, प्रभु राम की, प्रभु कृष्ण की, रामकृष्ण परमहंस की, विवेकानंद की, अरविंदो घोष की, लोकमान्य तिलक की, नारायण गुरु की, सुब्रमण्यम भारती की, ये महात्मा गांधी की, ये हमारी विरासत है. हमारी विरासत कभी औरंगजेब बाबर नहीं हो सकते. Many members from the opposition said that the Congress party introduced 42nd Amendment, socialism, secularism in the Constitution with a laudable objective. Let me tell this nation and let me tell this august house that there was no laudable objective behind that insertion. The only objective was to create a monopoly in politics, monopoly for the dynasty in politics, and monopoly in the economy, so that there will be no challenge to the Congress party's first family. This is exactly what Baba Sahib Ambedkar wanted to oppose. The idea was that by bringing socialism, by saying that there is going to be only one type of form of government, only one type of party, all type of competition was killed in the politics. Dynasty rule was perpetuated. And the idea was that politics will be controlled by the dynasty's monopoly, and the economy in turn would be controlled by the state's monopoly. This vicious cycle, Speaker sir, kept the country poor, kept the country hungry, and kept the country backward. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman opened the two-day debate on 75 years of the Constitution in the Rajya Sabha and hailed the Constitution, noting that many other countries that gained independence around the same time as India had either modified or rewritten their founding documents. Post-Second World War, nearly 50 countries, in fact over 50 countries, had become independent and they had their constitution written, but many have changed their constitutions, not just amended them, but literally changed the entire feature of their constitution. But our constitution has stood the test of time, of course yielded itself to very many amendments. While looking at those amendments, I like to have a touchstone of 4 different elements. One, has the social intent behind any amendment been genuine? And therefore the outcome has been genuine? That's one test I would like to place any amendment on the testing board. Second, I'd like to see if the economic intent and the economic outcome of any constitutional amendment has actually been bona fide and has the outcome helped the society at large. Third, I'd like to test it on the ground of process adopted for it, for the amendment itself. And fourth, the constitutional spirit behind such an amendment. Now, if an amendment can go through these kind of tests, we'll be able to see why India's constitution, going by the words of Dr. Ambedkar, if you had good people who are called to work on it, give good outcomes. If you have, I'm using Ambedkar's words, sir, bad people who are brought to work on it happen to give such outcomes which are discussed. But during 1951, when the amendment for the first Constitutional Amendment Act was passed, it was an interim government and not elected Government of India post 1947. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah also participated in the discussion commemorating the 75th anniversary of the adoption of the Constitution of India. Responding to the discussion in the upper house, he emphasized that this deliberation serves 2 significant purposes.
First, it highlights the immense progress our country has achieved under the framework of the Constitution. Secondly, it underscores how the democratic roots of our nation have deepened over the past 75 years thanks to the Constitution's foundational spirit. He further remarked that this discussion sheds light on the consequences of attempts to undermine the essence of the Constitution. संविधान बदलने के मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं, थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाए किसी का। भाजपा ने 16 साल राज किया, माननीय 6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया और 5 साल और मोदी जी करें। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की। और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने परिवर्तन किए। ये परिवर्तन का टेस्ट कैसा था, किस प्रकार से किए गए? संवैधानिक प्रक्रिया से भी परिवर्तन होते हैं और संविधान को तोड़ मरोड़ कर फॉर्मेलिटी कर भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, क्या हासिल करना था? क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए? क्या हमारे जिनको अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को समकक्ष अधिकार लेने के लिए परिवर्तन किए गए, या अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन? इस पर से ही पार्टी का कैरेक्टर, पार्टी के चलने की पद्धति और पार्टी का संविधान में विश्वास, ये सबको मालूम पड़ता है। Rajya Sabha also discussed rich discussion on the glorious journey of the Constitution of India. We are diverse in terms of languages, cultures, customs, and tradition, but united by this Constitution, which helps us overcome the various centripetal and centrifugal forces that threaten to break the nation apart. Honorable Chairman, sir, when the nation was being targeted and was facing many challenges, the integration of princely states, some provisions were made which were meant to be temporary, transitional, and special provisions, thus underscoring their impermanence. Under such a provision was kept Article 370 in Part 21 of the Constitution. And I quote, "It can be garnered from the historical context for the inclusion of Article 370 and the placement of Article 317 in Part 21 of the Constitution that it is temporary provision." हम 2 वर्ष पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको ये मौका मिला कि हम अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव में भागीदार बन सकें। और आज हम संविधान के एडॉप्शन पर, अपने 75 वर्ष पूरे होने पर, इस मौके के भी हम चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। और कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद हमें अपने रिपब्लिक को, गणतंत्र को 75 साल पूरे होते हुए देखने का भी सौभाग्य मिलेगा और उसका भी चश्मदीद गवाह होने का सौभाग्य मिलेगा। In one of his speeches to the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar, while underlining the importance of constitutional morality, emphasized the essence of constitutional morality was to regard the Constitution as supreme and to follow the constitutionally mandated procedures regardless of any ideological differences. All the 3 organs of the state and persons gracing the constitutional posts, members of the civil society and common citizens of India are expected to abide by constitutional morality. The success of Indian Constitution for a country as diverse as India continues to intrigue, impress and inspire experts around the world. With that, it's a wrap from my side.